Hi everyone, this is Tanu Vermani here, and I'm from babycode IELTS. So, today's session is about true false not given question. So, I'm going to share you some of my strategies for true false not given questions so that how you can tackle this type of question which comes in your reading module. Then, after this, I'm going to share you some practice exercise which will help you in tackling your strategies and even the difficulties you're going to face in your true false not given question. So let's get started and see what are true false not given questions. True false not given question means you have to locate and identify specific information. You have to remember that this type of question only wants you that you have to locate. आपको क्या करना है? Locate करना है, identify करना है specific information को. This information will be presented in the text as facts. ये facts की form में होते हैं. Always remember that true, false, not given are in the form of facts. This is not based on opinions, writer or views or any of the claims of the writers, right? Information in the text follow the order of the question. That means आपकी जो information है text में और आपके जो questions है उनका order same रहता है. That means अगर आप answer number 1 find out कर रहे हो question में, so you will get it always in the beginning. वो आपको beginning में ही मिलेगा, right? So now what you're supposed to do, the information you need for the first statement, वो पहले मिलेगा and then आपको क्या मिलेगा? Second statement. Now when you read the statement, जब आप statements को read करते हो, you have to decide कि क्या है आंसर इसका. So answer can be in 3 forms. या तो वो true होगा, false होगा और either not given होगा. True क्या होता है? True का मतलब होता है जब statement agree करता है information से. That means statement exactly present है. जो question है आपका और जो आपका statement text में given है वो agree कर रहे हैं. That means वो same है, similar meaning है. That is true. False क्या होता है? जब statement contradict करता है, opposite होता है. Statement present है but वो क्या है? Opposite है, contradictory है. That is called as false. And not given क्या होता है? जब उस statement से related कोई information ही given नहीं है. Some keywords can be present there, but the entire statement or the meaning of the statement वहां पे available नहीं होता. That is not given. So let's look in detail here some strategies कि कैसे आप solve करोगे true false not given, because these are the most difficult that student face, right? So what is the first one? The questions are asked in the same order. Questions किस form में होते हैं? Same order की form में होते हैं जैसे आपका text होता है, right? जैसे आपके questions होंगे वैसे ही आपका text होगा. In order to know the correct answer, you need to understand the text given and check which fact about the text is true, false or not given. अगर आपको correct answer को find out करना है, आपको text को समझना पड़ेगा, right? You need to understand the text and then you have to check कि कौन सा fact दिया है text के बारे में. ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन है. अगर वो इंटायरली प्रेजेंट है, उसका मीनिंग जो आपका क्वेश्चन का मीनिंग है और मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट स्टेटमेंट भी सेम है, दैट मीन्स इट इज ट्रू. बट अगर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, वो वहां पे नहीं प्रेजेंट, उसकी जगह कुछ और प्रेजेंट है, ऑपोजिट है, देन इट इज फॉल्स. और अगर वो स्टेटमेंट आपको गिवन नहीं है, द मीनिंग इज नॉट प्रेजेंट, देन इट इज नॉट गिवन. ओके. Now, third thing is you have to read the first paragraph carefully and try to answer the questions. सबसे पहले आप क्या करो? First paragraph को read करो. If you find the answer, then do not rush to write it. आपको quickly answer को नहीं लिखना. What you need to focus is कि आप क्या करो? Sentence को carefully read करो, decide करो कि answer correct है कि incorrect है. When you don't find the answer in first paragraph, अगर आपको first में नहीं मिला, then you move to the second and then repeat the procedure. अगर आपको second में भी नहीं मिलता, then move on to the third one, right? So you have to read the information text carefully. आपको बहुत carefully अपनी information को read करना है to find whether the keywords in the question are present. Now see, जब आप questions को read करते हो, आपको कुछ keywords मिलते हैं.
वो कीवर्ड्स आपको किस चीज में हेल्प करते हैं कि आप स्टेटमेंट को लोकेट कर पाओ। कीवर्ड्स आपको ये नहीं बताते कि आपका आंसर ट्रू है, फॉल्स है कि नॉट गिवन है। ये आपको तब पता चलता है जब आप एंटायर स्टेटमेंट को रीड करके अंडरस्टैंड करते हो, राइट? एम आई क्लियर? Yes, ma'am. So you have to keep in mind that text will be paraphrased. This is the most important thing कि आपको statements क्या मिलेंगी, paraphrase मिलेंगी। आपको same word, same synonym या exactly entire statement same नहीं मिलेगा, synonyms मिलेंगे। And you also have to look for controlling words. आपको controlling words like always, often, mainly, however, but इन वर्ड्स का क्या करना है, कीप इन माइंड कि ये वर्ड्स क्या करते हैं, इजीली स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज कर देते हैं, राइट? डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, बिकॉज यू नो दिस इज एन आइल्स रीडिंग, है ना? 55 मिनट्स, अकॉर्डिंग टू मी 55 मिनट्स है आपके पास 40 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने के लिए। लास्ट 5 मिनट्स आपको चाहिए राइट डाउन करने के लिए आंसर्स को। सो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो एंड make your reading skills improve. Sometimes word like yes no, no information भी यूज होते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम yes no not given भी करेंगे। These are slightly different, ठीक है, क्योंकि ये ओपिनियन पे बेस्ड होते हैं। Now instead of focusing on only the keywords, क्या करो, try to read the sentence completely और identify करो अपने आंसर को। मैच करो फैक्ट्स को with the given correct and accurate information in the text. Once you feel कि आपका पर्टिकुलर फैक्ट मैच कर रहा है टेक्स्ट के साथ, उसको रीड करो एक बार अगेन, सो दैट आप कंफर्म कर पाओ कि आपका फैक्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो स्टेटमेंट इंटायरली वहां पर गिवन है तो वो नॉट गिवन नहीं होगा, राइट? वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब आपको ट्रू एंड फॉल्स में से डिसाइड करना है कि वो क्या है, राइट? नाउ लेट्स डू दिस विद एन एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं इसको। दिस इज अ पैसेज अबाउट लाइफ एंड वर्क ऑफ अ मैरी क्यूरी। ये मैरी क्यूरी के बारे में एक पैसेज है। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, स्टेप नंबर 1 इज कि आपको क्वेश्चंस को रीड करना है एंड अंडरलाइन करना है अपने कीवर्ड्स को, अपनी की इंफॉर्मेशन को। सो साइमल्टेनियसली आप भी मेरे साथ यही प्रैक्टिस करोगे। नाउ सी हियर, द फर्स्ट थिंग टू डू बिफोर लुकिंग एट द टेक्स्ट इज लुक एट योर सेट ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो आपको क्या देखना है, अपने क्वेश्चंस को देखना है सबसे पहले। पैसेज को रीड नहीं करना, टेक्स्ट को रीड नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करना है। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? नाउ वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मैरी क्यूरीज हस्बैंड वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। सो मैरी क्यूरी के हस्बैंड, राइट? कीप इन माइंड यहाँ पे कीवर्ड है मैरी क्यूरीज हस्बैंड। ही वाज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। नाउ व्हाट इज मेंशन्ड हियर कि वो क्या है, मैरी क्यूरी के हस्बैंड है। वन थिंग इज दिस, एंड ही इज अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ मैरीज नोबेल प्राइजेस। वो जॉइंट विनर है 2 नोबेल प्राइजेस के, राइट? बोथ नोबेल प्राइजेस के। तो अब हम जब स्टेटमेंट को रीड करेंगे, पैसेज को रीड करेंगे, वी विल कीप इन माइंड कि स्टेटमेंट रिलेटेड होना चाहिए मैरी क्यूरी हस्बैंड से, उनके हस्बैंड से। एंड हस्बैंड क्या है, जॉइंट विनर है मैरीज नोबेल प्राइज, राइट? Second statement says Mary became interested in science. So now the keyword is that Mary became interested in science. कब? When she was a child. So this is our keywords. ये हमारे keywords हैं. We have to focus on these. Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contributions. तो उसने attend करी थी Sorbonne University. क्यों? रीजन क्या है? उसकी सिस्टर के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की वजह से। नाउ सी, इन वर्ड्स का आपको सिनोनिम मिलेगा पैराग्राफ में, द सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन द एंटायर स्टेटमेंट। आपने स्कैन करा ईच स्टेटमेंट को, अंडरलाइन करा, हाईलाइट करा कीवर्ड्स को, फोकस करो अपनी की इंफॉर्मेशन को जो आपको गिवन है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? आपके टेक्स्ट के मीनिंग के लिए। सो यू कैन सी वी हैव ऑलरेडी अंडरलाइन, मैंने अंडरलाइन करा इन कीवर्ड्स को, आपको भी इनको अंडरलाइन करना है व्हेन यू अटेम्प्ट दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट?
Now, they can be simple facts, they can be names, place, figure, or they can be the words also, right? So focus on the questions, numbers पे focus करो, verbs पे focus करो, right? So for example, first statement में जैसे हमने देखा कि Mary's husband was a joint winner of both Mary's Nobel Prizes. So हमने underline करा और highlight करा most important information, right? So Marie Curie's husband, he was a joint winner of both Mary's Nobel Prizes. So same way you also have to do this. Let's move further. Now second thing is अब आप क्या करोगे step 2 में scan करोगे अपने text को with these keywords. इन keywords को find out करोगे, scan करोगे कि आपको same keywords मिल रहे हैं या कुछ synonym available है. So जब आप highlight करते हो अपने keywords को और अपनी information को and then look at the text, scan करो same words के through या words with a similar meaning. That means synonym के through, right? So, for example, जब आप read कर रहे हो statement number 1 को, so you should be thinking of the words कि Marie Curie's husband, he was a joint winner of 2 Nobel Prizes. Both का मतलब क्या होता है? 2 Nobel Prizes. So you will start thinking of words in synonym. आप start करो सोचना कि क्या क्या synonyms आपको मिलने वाले हैं. Husband, Mr. Curie, both, one, two, second, twice, with her husband, without her husband, on her own, or by herself. You can start think of the synonyms कि ये सारे synonyms वहाँ पे available हो सकते हैं आपके लिए. Now, when you look at the text or find करोगे words that relate to the statement, you will see. Now here, let's find this. Now see, try to find the first statement. First statement को find करने की, just keep a try with me. See, read along with me the first paragraph. Marie Curie is probably the most famous woman scientist who was ever lived. Both Maria's Skłodowska in Poland in 1867. She is famous for her work on radioactivity and was twice a winner of the Nobel Prize. So that means Marie Curie kya thi? She is famous and she is the twice winner of Nobel Prize. But हमारा statement क्या है? What is our statement? Can anybody tell me? What we have to look for in the first statement? Yes, Jyoti? They talk about, Your voice is not. they talking about their husband. Yes. So we have to look for a keyword which talks about husband part, right? So with her husband, husband is here, and the name of husband, Pierre Curie, and Henry Becquerel, she was awarded with 1903. She was she was she was awarded with 1903 Nobel Prize for Physics and was then sole winner. So read here, she was awarded the 1903 Nobel Prize for Physics. तो उसको 2 प्राइज मिले थे, 2 नोबेल प्राइज मिले थे. First was 1903 में एक मिला था for physics and was then sole winner of 1911 Nobel Prize for chemistry. So in total 2 prizes थे. फर्स्ट प्राइज जो 1903 में मिला था वो उसके हस्बैंड के साथ था एंड हेनरी बैक्रोल के साथ, बट जो सेकंड मिला उसे 1911 में, उसकी वो सोल विनर थी. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट? डू यू गेट द आंसर ऑफ योर फर्स्ट स्टेटमेंट? एनीवन? यस प्लीज. Yes, anyone who got the first answer? Yes, Jyoti. Answer is true, na? Why it's true? Was her husband, क्या उसके husband joint winner थे both prizes में? Our question is this. हमारा question क्या है? कि Marie Curie's husband was a joint winner of both Marie's Nobel Prize. So क्या उसके husband joint winner थे both Nobel Prizes में? No, ma'am. No, दोनों में नहीं थे. He was
फर्स्ट वाले में ही वॉज अ विनर, वो उसके साथ विनर थे, बट सेकंड वाला जो उसे नोबेल प्राइज मिला था उसमें शी वॉज द सोल विनर, वो अकेली विनर थी। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज false. फॉल्स बिकॉज ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो, राइट। हस्बैंड वॉज नॉट अ जॉइंट विनर ऑफ बोथ नोबेल प्राइज, वो दोनों नोबेल प्राइज के विनर नहीं थे उसके साथ, एक के थे और एक की वो सोल विनर थी। गॉट इट एवरीवन? एनी डाउट इन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन केयरफुली। क्लियर? नाउ Yes, ma'am. what is the second statement? Mary became interested in science when she was a child. Now what you are supposed to do? See here, हमने read करा question को, we got to know about the first one. अब हम second statement को जब read कर रहे हैं, then this statement talks about कि Mary became interested in science. Mary interested हुई थी science में कब से? When she was a child. अब ये हमारा स्टेटमेंट है और हमें इसकी इंफॉर्मेशन को फोकसली रीड करना है। सो जब हम स्कैन करेंगे अपने टेक्स्ट को, हम क्या सर्च करेंगे कि इज द स्टेटमेंट टॉकिंग अबाउट, किसी भी स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि वो इंटरेस्टेड थी साइंस में और शी वाज अ चाइल्ड। So when we think of this statement, we will look for synonyms कि interested in science, subject of science, science classes, school science, child, childhood, at school, young girl, जितने भी synonym है child से related या interested in science से related, we will look for all that, है ना, क्योंकि हमें same words नहीं मिलने वाले, right? So see the statement, जब हम paragraph को read कर रहे हैं, when we read the paragraph here, can anybody read with me here? Now as I told you sequence में होगा, so we got the first answer here, हमें अपना first answer यहाँ पर मिला, तो second कहाँ मिलेगा? After that, right? So हमें अब first paragraph को read करने की need नहीं है, we will read the second paragraph. So यहाँ पे childhood लिखा है, from her childhood Mary was remarkable for his prodigious memory, memory से related statement है। At the age of 16, अब 16 की एज में क्या हुआ था? She won a gold medal, उसने गोल्ड मेडल विन करा था on completion of a secondary education, तो उसने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करी और उसको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला, राइट। नाउ डिड वी गॉट एनीथिंग रिलेटेड टू अभी साइंस पार्ट? क्या हमें साइंस से रिलेटेड कुछ मिला? एनी स्टेटमेंट? Because of her father lost his saving through bad investment, she had to work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister medical study. So we got any statement जिसमें ये mention हो कि वो interested थी science में when she was a child? No, ma'am. Yes, anyone? Bella? I'm No, talking to ma'am. everybody here. Do we get any statement जिसमें, No, ma'am. राइट? तो हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं मिला जिसमें ये मेंशन हो कि शी वाज इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज चाइल्ड। सो एज अ चाइल्ड उसकी मेमोरी अच्छी थी, शी हैज अ ग्रेट मेमोरी, बट वी कांट मेक अजम्पशन, हम अजम्पशन नहीं लगा सकते ना कि अगर उसकी मेमोरी अच्छी थी तो मे बी वो साइंस में अच्छी होगी। नो, राइट, वी हैव टू फोकस ऑन द फैक्ट्स। हमें कोई भी ऐसी स्टेटमेंट में नहीं लिखा जिसमें ये मेंशन कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड है या शी वॉज अ चाइल्ड। सो दैट मीन्स देर आर नो फैक्ट्स, कोई भी। Not audible. यस बलजिंदर? सो वी डू नॉट हैव एनी स्टेटमेंट जो ये मेंशन करे कि साइंस एंड हर इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। सो दैट मीन्स यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये आंसर क्या होगा? नॉट गिवन होगा, राइट? क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Now let's look at the third statement also. Third statement was Mary was able to attend Sorbonne because of her sister's financial contribution, right? अपने sister के financial, am I not audible Baljinder or anyone? Yes, please. So she was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. अब सबसे पहले हमें ये फोकस करना है कि क्या उसने अटेंड करा था सॉर्बन, और अगर अटेंड करा था तो उसका रीजन क्या था? उसके सिस्टर के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की हेल्प की वजह से।
तो जब हम सर्च करेंगे, स्कैन करेंगे अपने टेक्स्ट को, हमें फोकस करना है इस बिकॉज पे, इस रीजन पे, राइट, कि ये रीजन वहां पर होना चाहिए तभी ये ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा, और अगर स्टेटमेंट ही नहीं होगा तो ये नॉट गिवन होगा, राइट। सो वी विल लुक फॉर सिनोनिम्स कि फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। इट कैन बी मनी, अफोर्ड, एक्सपेंसिव, सॉबर्न है तो सॉबर्न यूनिवर्सिटी, सिस्टर्स, father, husband, education, finance, financial, paid, payment, contribution, contribute, give, help. So we will look for all these synonyms. हमें ये सारे synonyms check करने हैं. So जब हम scan करेंगे अपने text को, when we read, so हम second के बाद read out करेंगे. That means third paragraph में, और after the second one, जहाँ पे हमें second answer मिला है, उसके बाद read करेंगे. So from her childhood हमने यहाँ read करा था. Her father lost his saving through bad investment. She then had to take work as a teacher. From her earnings, she was able to finance her sister Bronia's medical study in Paris. अब उसने as a teacher work करा, अपनी earnings के through उसने अपने sister को financially help करा medical studies के लिए Paris में. On the understanding, read this statement very carefully. On the understanding, that means इस understanding में that Bronia would in turn, तो that means in turn वो क्या करेगी, help करेगी to get an education. किसकी help करेगी in return में वो, मैरी क्यूरी की. So in 1891, this promise was fulfilled. ये promise fulfill हुआ, and Mary went to Paris and began to study at Sorbonne, the University of Paris. So what does this statement means? मैरी अटेंड कर पाई थी सॉर्बन अपनी सिस्टर की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की हेल्प की वजह से, और नहीं? यस प्लीज. मैरी ने अटेंड करी थी यूनिवर्सिटी? यस एवरीवन. यस, बिकॉज ब्रोनिया ने लेटर ऑन उसकी हेल्प करी थी, राइट, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने में, एंड देन मैरी हैज अटेंडेड, मैरी डिड अटेंडेड दिस पार्ट. So that means our statement is true, right? Our statement is true because this means later on उसने उसको बोला कि yes we will, I will provide you, right? So in later ये promise fulfill हुआ और वो पेरिस गई and then began to study at the Sorbonne University. Clear everyone? Now let's do one exercise. I hope everyone got this. Any doubts, please ask me. Yes, everyone. Any doubts still here? No, ma'am. Okay, then you're supposed to do this exercise. I'm giving you some time to read the questions first, then attempt this exercise. Okay? So you have 5 minutes to do this. Please quickly. First, read your questions, underline your key information, and then find the answer in the text.
Anyone needs help? You have to be little quick in finding the answers because the answers will be in the sequence also, right? So let's discuss the answers. Yes, everyone? Yes, Jyoti, Baljinder, David. Yes, ma'am. Okay, let's see the first Class. question. Many scientists thought it was irrelevant to release the aerosol sprays into the stratosphere above the Arctic. Yes. What is the answer for this statement? Please check what you have written. Now, False. yes, False, false. First is false. yes. Many scientists thought it was irrelevant. Now, statement says कि वो irrelevant था. Was it irrelevant thought by the scientists? No, scientist has proposed these. Scientists has proposed, scientists do not believe that it is irrelevant, right? So that is why the statement is false because it is con, right? Next one, sulfur dioxide. Second statement. One is true, ma'am. Yes. Uh, Sulfur dioxide aerosol leads to global dimming. It's clearly mentioned here, right? कि sulfide aerosol से क्या होता है? It leads to global. The historic volcanic explosions on the Mount Pinatubo in the Philippines occurred in 1991. It's clearly given. They're always in the sequence. Planting of birch trees in the Arctic region will absorb the radiation. So do we got any statement related to this? Now see here. यहाँ पे हमने written है something about planting of millions of birch trees. This History, yeah. but they will absorb radiation or something like that. It is not given कि अगर हम plant करते हैं birch trees को Arctic region में, it will absorb radiation. No, nothing is given to this part. So Oh, this, God. What was the second statement, ma? sorry, What of the second statement that talk about whereas the region of native evergreen pine tree? sorry, David, you're talking about which statement? Yes, there's a statement after the one you just read. Whereas the region of native evergreen pine shades, the snow and absorb radiation, the bench will shade their leaves So in winter. it is about native evergreen pine shades, right? It is not about the Okay. birch trees. We are looking for the birch trees, Okay. right? So that is not our required Okay. statement. It talks about pine shades, Okay. the snow and absorb Okay. radiation, whereas we have to look for planting of birch trees Pine, in the Arctic. birch tree. Yes. Fifth statement says climate scientists says that rerouting Russian rivers will not only increase the water flow in the ice forming areas, but also help in slowing down the warming. So yes, it is that it will increase the cold water flow, right, in the ice forming areas and could also be slow down warming, says some climate scientists. This is true. Okay. Now let's do one more. Please do this. Yes, ma'am. Yes, please do this. This is the second exercise.
Yes, everyone done? Yes, ma'am. Okay, so let's discuss the answers. Yes, ma'am. Okay, so the first one, we can decide what to dream. We can decide what to dream. Yes, please. No, ma'am. How come it is no? Yes, Baljinder, please tell. Because we can't decide. Daydreams are not dreams because we can only daydream if we are awake. Also, we choose what our daydreams will be about, which we cannot usually do with the dreams. That means we cannot decide. हम नहीं decide कर सकते कि हम क्या dream करने वाले हैं, right? Next one. Not all day dreams come true. Not all day dreams come true. Yes, ma'am. We know that what we imagine is unlikely to happen. Yes. With many daydreams, we know that what we Yes. imagine is unlikely to happen. Yes, many daydreams are unlikely to happen, and only some daydreams are likely to happen, right? Next one, daydreaming helps in formation of new ideas. Yes, ma'am. True. So, I However, think, many daydreams are however, about some daydreams are about Yes, things that are understand, and it helps to be creative also. creative. Daydreams may become dreams. Daydreams may become dreams. Yes. Daydream may become dreams. Yes, anyone? Daydreams may become dreams. It is not mentioned anywhere. So this is yes. So daydreams may become dreams. ma'am, this information did not give. Yes, it is not Not given. dream. Daydream help us to be creative. Yes. This is not So given it's anywhere. not given. Yes. Last one, Isaac Newton said that imagination is more important than knowledge. Yes. What about this one? He mentioned that firstly, it's not about Isaac Newton, it's about Albert Einstein. Albert Einstein said that imagination is more important than the knowledge. Exactly. The passage states about Albert Einstein, who said that imagination is more important than knowledge. Clear? Yes, ma'am. Doubts still here? No, ma'am. I hope now you got an idea how you're supposed to solve this true false not given questions, right?